Hey everyone, I'm making this video for all those who are preparing for KVS interview. So I'm Priyanka Vats. I cleared my KVS last year, 2018, and I got the posting in Kerala, Kochi, Ernakulam. I didn't join there because I'm working in Delhi government. Right. So let's start with the KVS. Okay. So the number one and the most important thing is that you must have the confidence, right? Like I've been working on like for last 3 years in Kendriya Vidyalaya as guest teacher, but at the time of interview, I still felt some nervousness there, right? Because like I did lots and lots of mock interviews at the institute which I joined, named as DFFT. So there I did lots and lots of mock interviews, which helped me a lot to build up my confidence at the time of interview. Because even like I just felt that I was so confident, means I used to be a confident girl, but still at the time of interview I just felt कि अगर वो confidence ना हो तो हम अपने thoughts को clearly नहीं रख सकते हैं. That is a very important thing. Then the second important thing is how to enter, how to exit, कैसे कैसे बात करनी है. कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस किस तक मीन्स अगर कोई मुझे इधर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे सिर्फ इसको नहीं देखना, बाकी सारे पैनल्स को देखने हैं. Like 5 to 6 people like generally are there in the KVS इंटरव्यू पैनल. सो दे आज द क्वेश्चन, और मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि एक ने क्वेश्चन पूछा, मैं इधर आंसर कर रही हूँ, बाकियों को आंसर करने की बजाय इधर से इतने सेकंड क्वेश्चन आ जा रहा था. सो मीन्स यू शुड बी लाइक अवेयर हाउ टू आंसर दैट. तो आपको ट्राई करना है कि उसको भी आंसर करना है, और सर लेट मी जस्ट आंसर दिस फर्स्ट, उसके बाद मैं आपका आंसर देती हूँ. सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच यू आर सपोज टू बी डन. देन द नंबर 2 थिंग इज नंबर 3 आई थिंक, राइट. सो द नंबर 3 थिंग इज कि आप कोई भी एक चैप्टर, मीन्स आई वुडंट से कोई भी एक, कम से कम 2 3 4 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के प्रिपेयर करके रखिए. लाइक आई प्रिपेयर्ड आवर फूड, और मैंने वो, अगर मुझे को बोला जाए फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड, राइट. तो एक्शन के साथ दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्टिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन योर वॉइस मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, right? So during the mock test, the mock interviews, they used to tell us, means the Kamal sir, Kamal sir and all other teachers, like I believe Vikas sir and some other teachers also, means they are from the KVS panel itself. So they helped us a lot. How to, means what kind of question are supposed to be asked, and I was quite lucky that all those questions was actually, means like triple talaq, अच्छे दिन मोदी के, or being asked in my interview. So yeah. देन मीन्स हिंदी. अब ऐसा नहीं है जिनको हिंदी आती है तो वे उनको लगे कि इंग्लिश में हमसे पूछेंगे तो हिंदी में ना पूछा, तो ऐसा कुछ नहीं है. आपको चाहे इंग्लिश आती हो चाहे हिंदी आती हो, आपको अपने थॉट्स अच्छे से रखने हैं, ठीक है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके. इंटरव्यू से रिलेटेड जो और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तो आपका ड्रेसिंग सेंस, कि आपने क्या पहना है, ठीक है, आप उसको अच्छे से कैरी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. और ट्राई करना कि जो आपके वहाँ पे बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, जो इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यूअर्स हैं, उनको एज अ चाइल्ड कंसिडर करना वाइल टीचिंग और वाइल टेलिंग अ पॉइंट, राइट. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है नंबर, लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इंट्रोडक्शन, योर रिज्यूम. Means our, like one of the teachers, Shiv sir, he helped us to prepare such a good resume. Means it's very rare that they listen the whole resume, right, the whole during the introduction, means your introduction. So but I was quite lucky, they listened each and everything regarding my resume, and they asked like about my introduction, and they asked question related to that. So that's very much important, it should be impressive, right. Then you should be calm, all right. So means I'll suggest you to join some institute, because that help you to prepare like for the mock test, that mock interviews, which is quite important. And the best thing which I felt about the mock interviews is that you are able to practice as much, means you'll not practice at home because there are lots of pressure, there are lots of work, but there you can do lots of practices, and you also build up the confidence because you are speaking in front of many other students and many other teachers. Means आप बाहर आते हो, तो आप कुएं के मंडक नहीं रहते, बाहर आते हो, which is very very much important while the interview. So I'll just like I joined there at DFFT
Rohini West, 400 pillar number. Means that is a very very good institute which I felt. But those who are like want to do the home, like they want to do it at home, so I'll just recommend you read the newspaper, try to practice in front of the mirror, poem chapters अच्छे से prepare करो and do your best. Means you can do it. Means it's really really simple. Just be confident and deliver your thoughts. So that's it. All the very best. Have a good luck.